Assalamu alaikum students. Today we are going to read first chapter of second unit of first year book. This is It's Country for Me. This chapter has been written by Patricia Demuth and she wanted to write a book about the farmers and their life. So what she did to write a genuine book, she rented a house and along with her husband and her child, she used to live over there. It was a farm in Wisconsin, and she was observing all the time the farmer's family and their kids, how they spend their life. So, after this observation, she wrote a book, Joel Growing Up a Farm Man, which was awarded Best Children Award of 1982 by Midland Author Society. So, the chapter which you are going to read now is an extract from that book, Joel Growing Up a Farm Man. Here we are told in the form of Joel that how Joel, being a teenager, works as an adult in the farm. You will see the enthusiasm of Joel being a son of the farm man. Patricia Demuth ने ये चैप्टर इट्स कंट्री फॉर मी लिखा. पेट्रिशिया ने अपनी बुक लिखने के लिए जोल ग्रोइंग अप अ फार्म मैन, जिसमें वो फार्मर्स की ज़िंदगी के बारे में लिखना चाहती थी, उन्होंने यूएसए के एक स्टेट विस्कॉन्सिन में जगह किराए पे ली और ताकि रूरल अमेरिका के बारे में, रूरल लाइफ के बारे में लिखा जा सके. जब पेट्रिशिया ने बुक कंप्लीट की, जोल ग्रोइंग अप अ फार्म मैन, तो इसको बेस्ट चिल्ड्रन बुक का अवार्ड मिला 1982 में. ये अवार्ड उसको सोसाइटी ऑफ मिडलैंड ऑथर्स ने दिया. यहाँ इट्स कंट्री फॉर मी जो जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनके आंसर भी मार्क करवाऊंगी, साथ ही साथ ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी मार्क करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इट वॉज 11:15 at night when Joel, reading in a bed, heard his mother call up, "Come and feed Lamby, will you?" She usually fed the orphan lamb. She means mother of Joel, but tonight she had come home late from a meeting and didn't want to go to the barn wearing good clothes. Now because she didn't want to make untidy her good clothes, that is why she asked. Usually she had to feed that orphan lamby. Orphan means without parents. जो छोटा भेड़ का बच्चा था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और इसीलिए जोल की वालदा उसे बुलाती है और टाइम है 11:15. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कीजिएगा. वो उसको बुलाती है कि आप जाएं और बार्न में भेड़ के बच्चे को फीड करें, उसको खिलाएं. ये भेड़ का बच्चा ऑर्फन है, मीन इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है. बार्न इज अ प्लेस वेयर द फार्मर्स कीप देयर कैटल्स. मवेशी वगैरह जो जहाँ पे पालते हैं उसको बान बोलते हैं. द स्मॉल डॉग जेसिका jumped up from the doorstep as Joel came outside, a pair of overalls pulled over his pajamas, the laces of his boots dangling loose. Dangling means hanging. जोल ने अपने जो कपड़े हैं, पजामा वगैरह है, उसके ऊपर एक ओवरऑल सा पहन लिया था जो फार्मर्स अमूमन पहनते हैं. अगर आपने बच्चों की पोइम्स देखी तो उसमें एक ओवरऑल टाइप होता है, एक यूनिफॉर्म टाइप होता है फार्मर्स का, तो वो उसने पहन लिया. और चूँकि वो जल्दी में था तो वो अपने शूज़ की जो लेसेस है वो टाई अप नहीं कर सका, तो दे वर हैंगिंग लूज. हे जेस, ही ग्रीटेड हर, मीन ग्रीटेड दैट डॉग, ruffling the dog's thick fur with one hand as they loped together to the barn. Loped means with a long step they happily went towards the barn. Lop is a movement when you give, for example, a child some money to buy something for himself or to buy chocolate for himself. So he, with a happy movement, with the long steps, he is going towards the shop. This is called lop. उछल उछल के वो दोनों जाने लगे बान की तरफ. रफलिंग मीन्स बालों से थपथपा कर प्यार करना. फर मीन्स द हेयर ऑफ एनिमल्स बॉडी, जो जानवरों की खाल पे जो बाल होते हैं, दिस इज कॉल्ड फर. इन हिज अदर हैंड ही कैरिड लैम्बीज मील. जोल के दूसरे हाथ में लैम्बी का जो मील था या जो उसका खाना था, और वो खाना क्या था? मिल्क रिप्लेसमेंट इन अ सोडा पॉप बोतल कैप्ड बाय अ ब्लैक निपल. बॉटल थी जिसके ऊपर उन्होंने निपल लगाया था और
उसमें चूंकि उसकी मदर नहीं थी तो उसके मिल्क का रिप्लेसमेंट था। रिप्लेसमेंट मीन सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट मीन मिल्क के बदले में जो मील उसे मिल रहा था वो उसमें बंद था। द मार्च एयर वॉज कोल्ड एंड द यार्ड लाइट कॉट द मिस्ट ऑफ जोल एंड जेसिकाज ब्रेथ्स। तो चूंकि सर्दी का मौसम था, सो द मार्च एयर वॉज कोल्ड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा महीना था? मार्च का। इसी वजह से मिस्ट कहते हैं द फोग, स्मोक टाइप विच इज इमिटेड फ्रॉम योर माउथ इन विंटर्स। सर्दियों में आपके मुंह से जो भाप से निकलती है, इसी तरह का धुआं उनकी सांसों का जो है वो सन की रोशनी में नजर आ रहा था। अ डिम क्रेसेंट मून हंग लो ओवर द ईस्ट हे फील्ड। क्रेसेंट मून मीन्स अ थिन मून, हे फील्ड मीन्स ड्राई ग्रास। पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। हल्का हिलाली चांद मशरिक की तरफ आके सूखे घास के खेत पर चमक रहा था। Otherwise, the night was black. So there was no such light. The night was black. Here Lamby called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. Sprang up means jumped up. Straw bedding, bed made up of straws. Sucked down means drank. Animals, their consumption of food is speedier than human beings. So the lamb was hungry. He sucked all the milk in just 30 seconds. लैम्प जो बॉटल में वो मिल्क लेकर आता है, मिल्क का रिप्लेसमेंट, वो उसको बिल्कुल 30 सेकंड में ख़त्म कर देता है। हर मदर हैड डाइड गिविंग बर्थ टू हर अ वीक बिफोर। एक हफ्ता पहले इसकी माँ, जो लैम्प की माँ है, इसको बर्थ देने के बाद उसकी डेथ हो गई। दिस मे हैव बीन जोल्स 33,000 ट्रिप्स टू द बार्न सिंस ही गोज इन एंड आउट ऑफ बार्न एट लीस्ट 10 टाइम्स अ डे। दिन में 10 मरतबा जोल बार्न की तरफ आता जाता है, तो इस तरह से उसका कोई 33,000वां ट्रिप होगा बार्न की तरफ। जोल नोज दिस फार्म बिल्डिंग बेटर देन ही नोज हिज ओन बेडरूम। जोल फार्म की इस इमारत को बहुत अच्छी तरह से जानता है, अपने बेडरूम से भी ज़्यादा। ही श्योरली स्पेंड मोर वेकिंग आवर्स इन दैम। मीन व्हेन ही स्टेज अप, ही मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंट ओवर देयर, which shows definitely his enthusiasm towards the farming life. He knows how to care for the animals, the shelter, as well as he knows how to care for himself. वो ख़ुद की हिफाजत के बारे में भी जानते हैं और कैसे शेल्टर करना है और कैसे सेफ करना है एनिमल्स को, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानता है। फार्मिंग इज़ जोल्स वर्ल्ड। खेती बाड़ी जोल की दुनिया है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जोल हॉलैंड हैज़ लिव्ड ऑन दिस 245 acre farm since he was born 13 years ago. It is the farm of his ancestor. Ancestor means forefathers. ये उसके आबा अजदाद का फार्म है। The area is 245 acres. Underline it for MCQ. He lives in the house that his great grandfather built. So the house he is living was built by his great grandfather. जिस मकान में वो रहते हैं वो उसके परदादा ने तामीर किया था। The land he helps his father and brother farm is land that his great grandfather James Holland bought in 1860. जो फार्म की ज़मीन थी उसके परदादा जेम्स हॉलैंड ने ख़रीदी थी 1860 में। जेम्स वॉज एन आयरिश इमिग्रेंट। जेम्स आयरलैंड का महाजिर था। Important from translation point of view, he drew a team of horses to plow the land. To plow means हल चलाना, the land and make it ready for corn. मीन बोने के लिए, कोई भी फसल बोने के लिए वो इस ज़मीन को जब तैयार करता था तो जेम्स इसको हॉर्सेस की मदद से तैयार करता था। Now 5 generations later, Joel plows the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. अब लेकिन जोल जो है ये काम ट्रैक्टर की मदद से करता है जो कि 120 horses की ताकत रखता है। The rich black soil has been pampered by Holland for over 120 years. इस फार्म का ख्याल हॉलैंड जोल की फैमिली का नेम है, तो हॉलैंड लोग जो हैं ये 120 साल से इस फार्म का ख्याल रखते आ रहे हैं। पैम्पर मीन टू टेक केयर। फार्मिंग इट इज़ जोल्स हेरिटेज। तो खेती बाड़ी जो है वो जोल की विरासत है। अगेन इम्पॉर्टेंट
सेंटेंस ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द हॉलैंड फार्म इज नियर स्केल्स माउंट, स्केल्स माउंट के करीब है। अ टाइनी टाउन, स्केल्स माउंट क्या है, एक छोटा सा टाउन है। अंडरलाइन फॉर एमसीक्यूज। Of how many people? 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. Illinois is state of USA. तो snuggled mean living together, साथ साथ रहते हैं ये 400 लोग। The land there is hilly. यहाँ की ज़मीन जो है वो पहाड़ी है। Rolling in great waves, wavy है। In fact, just a few miles away is the highest point in the state. और इन्हीं के स्टेट में जो पहाड़ियों का ऊंचा सिलसिला है, ऊंची पहाड़ी है, वो भी मौजूद है। Joel attends public school in Scales Mount in split level brick building with 235 other grade school and high school pupil. 235 और स्टूडेंट्स हैं उसके स्कूल में। ये एक पब्लिक स्कूल है स्केल्स माउंट का। About half the students are farmers. आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में फार्मर्स हैं। 235 को अंडरलाइन कीजिएगा एमसीक्यू के लिए। This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th, but his class will not get larger, mean he will study with the same student except for 3 foster children, mean those children who come from another state for some time, who came and left. Joel has been with the same 19 kids since first grade. So he is studying with the same 19 students of first grade. I know every kid and particularly the whole school. He says some of those guys in school on TV don't even know the people in their own class. Mean here he refers towards the city school children. वो अपने स्कूल के अपनी क्लासमेट के बारे में नहीं जानते, जबकि मैं स्कूल में हर बंदे के बारे में जानता हूँ। Joel is a good student, though reluctant to discuss it. ये I guess I pull mostly A's, some B's. Joel एक अच्छा तालिब इल्म है, though he is hesitant to discuss it. Reluctant means to hesitate to discuss something. हिचकिचाता है इस बात को कहने से, और ख़ुद बोलता है कि मुझे ज़्यादातर एज मिलते हैं और कुछ बीज भी मिल जाते हैं। इन नेशनल टेस्टिंग जोल स्कोर्ड एन ओवरऑल 99%। अब जो उनका नेशनल टेस्टिंग सर्विस होता है उसमें जब जोल ने एग्ज़ाम दिया तो 99% मार्क्स हासिल किए उसने, मीनिंग दैट ओनली 1% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड हायर। हिज स्टडीज़ आर टिपिकल ऑफ एनी 8 ग्रेड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। किसी भी 8th ग्रेड के स्टूडेंट का सिलेबस जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट में जो सिलेबस है वो भी फॉलो कर रहा है। मीन देयर इज़ नो डिफरेंस in the syllabus for rural area and for city area. We are doing percent in mathematics. हिसाब में वो जो है फीसद के सवालात कर रहे हैं। English forget it, mean English के बारे में वो भूल गया। In history we are up to FDR. FDR means Franklin Delano Roosevelt. It's the name of 32nd president of USA. हिस्ट्री में वो जो है FDR तक पहुंच गए हैं। In science we do experiments like taking the chemical HCl and blowing up pieces of chalk. तो साइंस में वो कुछ तजुर्बात कर रहे हैं। But when the school bus drops Joel off, he runs up the quarter-mile lane. Lane mean a small street. To his farmhouse, slips out his sneakers. It's a type of shoes, comfortable shoes, and pull on his boots. और जो हैवी बूट्स हैं, टफ शूज़ हैं आप कह सकते हैं, जो फार्मर्स पहनते हैं। देन हिज लाइफ इज़ नो लॉन्गर टिपिकल ऑफ एन एवरेज टीनेजर। फिर उसकी ज़िंदगी एक टीनेजर से, नौजवान आदमी से बदल के एक एडल्ट आदमी की ज़िंदगी बन जाती है। हिज फुट गियर इज़ द क्लू। दिस सेंटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पाँव का सामान उसकी निशानी है। फुट गियर इज़ रिलेटेड टू शूज़। Joel wears boots every day, no matter what the season is. That's because he does chores every night after school and for several hours on weekend. The chores are boot work, hard, heavy and sometimes dirty. तो boots daily पहनता है क्योंकि फार्म के काम जो हैं वो हैवी हैं, डर्टी भी हैं, तो उसके लिए बूट जो हैं वो बेस्ट फुट केयर हैं। The daily chores that Joel does help run the farm and to support the family. फार्म का जो काम है वो चल जाता है, बल्कि इसके अलावा वो अपनी फैमिली की भी सपोर्ट और हेल्प करता है। सपोर्ट हियर मीन्स हेल्प। जोल इज़ अ टीनेजर बट ही डज द वर्क ऑफ एन एडल्ट। जोल एक नौजवान है मगर वो काम बिल्कुल बालिग आदमी के करता है।
Unlike most families where the parents alone make the money, farm families work together. Each child's labor is not only important to the family's well-being, it is essential. So unlike other families, farmers' children are working together to support family, to help family, and moreover, it is the source of income for all the farmer family. So each and every one works in farmer's family. दूसरे लोगों की तरह जहाँ सिर्फ माँ बाप ही काम करते हैं, किसानों के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ शाना बशाना काम करते हैं. इनका काम जो है फैमिली की भलाई के लिए न सिर्फ ज़रूरी होता है बल्कि लाजमी होता है. द हॉलैंड ऑपरेट्स अ सेल्फ सफिशेंट फॉर्म. हॉलैंड की जो फैमिली है या हॉलैंड का जो ख़ानदान है ये एक खुद कफील फार्म चला रहा है. ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कीजिएगा. टिपिकल ऑफ मैनी इन द कॉर्न बेल्ट इन दैट एरिया, दे रेज लाइव स्टॉक, kettles and a few sheep. In each herd they keep some females to replenish the stock. अब ये मवेशी भी पालते हैं जैसे भेड़े वगैरह भी. और हर एक रेवड़ में जो है, हर्ड मीन अ ग्रुप ऑफ शीप, जिसको हम उर्दू में रेवड़ बोलते हैं, इनके पास कुछ फीमेल स्टॉक ज़रूर होता है. वाई? बिकॉज अगर कुछ भी हो जाए तो रिप्रोडक्शन के ज़रिए उन शीप की तादाद को बढ़ा सकते हैं. द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सोल्ड फॉर स्लॉटर. जो ज़्यादा रह जाते हैं एनिमल्स उनको ज़बह करने के लिए बेच दिया जाता है. एंड लैंड ऑन अमेरिकाज टेबल एज बीफ एंड लैम. और फिर मटन, बड़े गोश्त के डिशेस के तौर पर उनको लोग खाते हैं. द हॉलैंड्स ग्रो वर्चुअली. वर्चुअली हियर मीन्स नियरली ऑल द फूड देयर एनिमल्स नीड. जितना भी फूड उनके एनिमल्स खाते हैं वो तमाम वो अपनी फार्म पे उगाते हैं, जैसे कॉर्न, ओट्स एंड हे, सूखी घास, जो मकई वगैरह सारी फसलें वो खुद ही उगाते हैं. दे सेल द सरप्लस. जो ज़्यादा हो जाता है वो उनको बेच देते हैं. सरप्लस मोर देन नीडेड. दो मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग द एनिमल्स देमसेल्व्स. ज़्यादातर जो उनके फार्म पे पैसा आता है वो एनिमल्स को बेचने से आता है. टू रन अ फार्म लाइक दिस, farmers have to have many skills. Farmer must be a very skillful person. They have to be machine operators driving immense and powerful vehicles. Immense means very great, huge, big. एक किसान के लिए ज़रूरी है कि वो मशीन ऑपरेटर हो, उसको ठीक कर सकता हो, और हैवी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चला सकता हो. दे हैव टू बी मैकेनिक रिपेयरिंग दैम. अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक होना भी ज़रूरी है कि उसको ठीक कर सके. हस्बैंडमैन, अ पर्सन हु नोज हाउ टू कल्टिवेट एंड ग्रो द क्रॉप्स. मीन किसान जो जानता हो कि फसलों को कैसे उगाना है. रेजिंग लाइफ स्टॉक, और मवेशी पाल सके. वेटेरिनेरियन, टेंडिंग देम व्हेन सिक, मीन वो जानवरों को क्योर कर सकता हो, ट्रीट कर सकता हो इन द टाइम ऑफ सिकनेस. वेटेरिनेरियन मीन्स एनिमल्स डॉक्टर. एग्रीकल्चरलिस्ट, ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर चीज़ें उगा सकता हो. एंड बिजनेस पीपल, इसके अलावा एक बिजनेसमैन भी होना चाहिए उसको, ताकि वो मैनेज कर सके अपने फॉर्म के तमाम जो डीलिंग्स हैं. एज जोल वर्क्स ऑन द फार्म, ही इज़ ऑल दीज वर्कर्स. चूँकि जोल फार्म पे काम करता है इसलिए वो सारे स्किल्स जो हैं इसको आते हैं. Yet he is a boy still and like an apprentice continue to learn new skills. तो अभी तक वो बच्चा है and he is a student. Apprentice means a student who learns something. Joel takes his learning seriously because his goal is to become a farmer. जोल अपने काम को बहुत संजीदगी से सीखता है क्योंकि फ्यूचर में उसका प्लान है कि वो किसान बनेगा. He is extremely alert and watchful like a cat. वो बिल्ली की तरह इंतहाई चौकन्ना और होशियार है. This sentence is important from translation point of view. Even when not actively involved in a chore, Joel can readily answer any question about what is going on. फॉर्म पे जो भी होता है या जिस तरह का भी क्वेश्चन आप उससे पूछे, जोल आपको बहुत क्विकली आंसर करेगा. रेडिली मीन्स क्विकली. ही लिसन एज हिज dad counsels a seat customer in the kitchen, as his brother Terry consults a vet about recent deaths in the hog herd, and his older brother discuss soil planning, which they made a fence. Knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जोल जो है वो constantly learning कर रहा है. If his father is talking to seed customer and if his brother is consulting some veterinarian for some diseases of pigs in the herd,
He listens their conversation very attentively because he is gathering knowledge about the farming life. जोल जो है हर किस्म की मालूमात इकट्ठा कर रहा है। तो वो कहते हैं कि knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind, और कभी कभी जोल के माइंड में जो नॉलेज है वो फ्लो करके आ रहा होता है, मतलब इतनी ज़्यादा मिकदार में वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है नॉलेज को। जोल इज़ द यंगेस्ट ऑफ एड एंड बेटी हॉलैंड 6 चिल्ड्रन। 6 चिल्ड्रन मीन्स एड और बेटी जो हैं ये इनके वालिद, एड जोल के वालिद हैं, बेटी वालदा। 6 चिल्ड्रन हैं इनके। सो MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ओनली ही एंड हिज ब्रदर मार्टी 16 years still live at home। अभी तक वो सिर्फ वो और उसका जो भाई है 16 years का जिसका नाम मार्टी है वो घर पे हैं। 2 other brothers बिल एंड टेरी come home each day to eat meals with the family। और भी भाई हैं बिल एंड टेरी, रोज़ाना सिर्फ खाना खाने आते हैं। बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म, और वो जो साथ में जो फार्म है उन्होंने वो किराए पे लिया है। ईच हैज़ हिज ओन लाइफ स्टॉक हर्ड, उनके पास मवेशियों का अपना ही एक स्टॉक है। बट दे फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली विद देयर फादर, लेकिन अपने वालिद की भी हेल्प करते हैं अपने फार्म को चलाने में। 2 other children, Kevin and Kathy, do not live at home. This year Kevin, 22, will graduate from college in Chicago. He will be the 4th college graduate among the Holland children. Holland family is very liberal. They are giving opportunities to their kids to go outside that farm and to avail the opportunity of getting education at different places. We insist they all go to the college, that they all go to college and get a taste of what it's like off the farm, says Betty, the mother of Joel. Then if they want to come back to farming, that's fine. If they like this farming profession and they want to come back and join that back, so we welcome them. लेकिन वो उसको मौके देते हैं अपने बच्चों को कि वो जाए। जैसे आप देख रहे हैं केविन एंड कैथी जो है वो घर पे नहीं है, क्योंकि केविन जो है वो 22 years का है और इस साल शिकागो कॉलेज से वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेगा, तो वो साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं। कैथी 24 इज़ द ओल्डेस्ट चाइल्ड एंड द ओनली डॉटर। जोल की एक ही बहन है कैथी जो कि 24 years की है और सबसे बड़ी बेटी है इस फैमिली की। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। शी इज़ नाउ अ रोमन कैथोलिक नन डूइंग ग्रेजुएट स्टडी इन डॉवर्क, आयोवा। वहाँ से कैथोलिक नन बनने जा रही है वो। लाइक हर ब्रदर शी ग्रू अप फार्मिंग, और अपने भाइयों की तरह वो भी इस फार्म पे काम उसने किया और बड़ी हुई। एंड शी स्टिल मिसेस इट। कैथी कॉल्ड दिस मे ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम्स एंड सेड, आई वुड गिव एनीथिंग टू बी प्लोइंग इंस्टेड। प्लोइंग हेयर स्टैंड्स फॉर फार्मिंग लाइफ, तो वो कहती है कि हल चलाना और फार्मिंग के लिए वो कुछ भी छोड़ सकती है। एज द यंगेस्ट जोल हैज़ अ टाइम हैड मोर फार्मिंग टीचर्स। जोल चूँकि सबसे छोटा है तो उसके टीचर्स फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे गाइडेंस लेता है देन ही इज़ वांटेड। वन नाइट ही सैट एट द किचन टेबल लिसनिंग टू हिज डैड एंड ब्रदर टॉक अबाउट द रिवॉर्ड्स ऑफ फार्मिंग। एक रात जब वो किचन में टेबल के गिर्द बैठे होते हैं तो जोल का भाई बिल कहता है, इट्स अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ, खेती बाड़ी की जो लाइफ है ये बहुत अच्छी खुद मुख्तार ज़िंदगी है। सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर योर ओन बॉस, आप खुद के खुद ही मालिक होते हैं। आई वुडंट नो सेड जोल ग्रिनिंग। ग्रिनिंग मीन्स स्माइलिंग। आई हैव गॉट बॉसेस मुझे बहुत सारे मालिक मिले हैं। हु आस्क्ड हिज डैड। जोल पॉइंटेड टू ईच वन अराउंड द टेबल। दे ऑल लाफ। जोल के वालिद परेशान होकर पूछते हैं कि कौन है आपके इतने ज़्यादा टीचर्स, और जोल मजाक में उनकी तरफ इशारा करते हैं कि आप सारे हैं, और वो हंस पड़ते हैं। जोल यूज्ड टू बी लार्जली एट समबडीज साइड वॉचिंग एंड लिसनिंग, lending a hand or going on the run for a tractor or forgotten tool. Because Joel is the youngest one, so he's always working with someone. और ही इज़ रनिंग फॉर सम फॉरगॉटन टूल, किसी न किसी की हेल्प कर रहा होता है जोल, और या फिर अगर कोई औजार उनको चाहिए तो भाग के वो प्रोवाइड कर देता है, उनके लिए लाता है। ही टुक द ओकेजनल बॉसिंग ही गॉट in strides. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. Go for से निकला है, अब वो काम करता है, हेल्प करता है
लेकिन अब चूंकि वो खुद भी काम बहुत ज़्यादा सीख गया है, ही इज़ नो मोर अवेलेबल फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए इतना ज़्यादा गोफर के तौर पे काम नहीं कर सकता। लेंडिंग अ हैंड का मतलब है टू हेल्प समवन, सो इट इज़ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स टू हेल्प समवन। If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm, says Betty. Joel की वालदा कहती हैं कि अगर मुझे एक लफ्ज़ में जोल को बयान करना पड़ जाए तो गर्मजोशी इसके लिए बहुत बेहतरीन लफ्ज़ होगा। He uses his youthful energy indiscriminately. वो अपनी नौजवान तवानाई को बिला किसी इम्तियाज़ के इस्तेमाल करता है। Indiscriminately means without differentiating the work. On one summer day, he jumped 15 fences, drew farm machinery 25 miles, fed 320 animals, opened and closed 8 gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2600 कैलोरीज। तो एक संडे जो है जोल की रूटीन ये रही कि उसने इतना सारा काम किया। शॉवल यहाँ टूल का नाम जो स्पैड जो बेलचा को बोलते हैं उसकी तरह से होता है। दिस इज़ यूजुअली यूज टू रिमूव सम सैंड, सम मड और इवन स्नो, बर्फ़ भी हटाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा काम जो है पैराग्राफ में है ये जोल ने किया एक संडे पे। On weekend and during the summer, Joel works outdoor anywhere from 8 to 15 hours a day. गर्मियों के दिनों में आउटडोर जब जोल काम करता है तो वो 8 से 15 घंटे तक वो काम करता है। The only time he minds it is during early spring. सिर्फ बाहर के जो इब्तिदाई दिन होते हैं इसमें उसको काम करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? Then the snow melts and rain often pours down daily because there is rain daily, that is why turning the farmyard into a swamp. इन बारिशों की वजह से फार्म जो है एक दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Mud sucks at his boots mean stick with the boot of Joel, making walking itself a tedious chore. Tedious mean a very tiresome work. जोल के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। More than the bother, though Joel hates the ugliness. लेकिन इन सब के अलावा जोल को ये मौसम इसलिए बुरा लगता है कि हर चीज़ बहुत अगली और बदनुमा दिखाई देने लगती है वो कीचड़ की वजह से। When it rains, everything seems so awful. जब बारिश होती है तो सब कुछ बहुत बुरा लगता है। इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिहाज से, regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. So Joel has energy for farm works. Joel not only uses his energy for a farm work, rather he plays sports apart from these works. He hunts deer and traps wildlife in the fall. Fall mean autumn. तो वो हिरन का शिकार करता है और इसके अलावा जंगली जानवरों को पकड़ता है। एंड snowmobiles in the winter. Snowmobiles is a type of cart which one uses in the winter on snow. बर्फ में जो है गाड़ी चलाता है सर्दियों में। Spring brings softball and basketball games. बाहर में वो ये दोनों गेम्स खेलता है, बास्केटबॉल और सॉफ्टबॉल। Summer provides weather फॉर वाटर स्कीइंग एंड फिशिंग. गर्मी के मौसम में स्कीइंग करता है और इसके अलावा मछलियाँ पकड़ता है. नियरली ऑल हिज फेवरेट स्पोर्ट्स आर प्लेड आउटडोर. तो आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एनर्जी ज़्यादा होती है. आप देख सकते हैं कि जोल ना सिर्फ फॉर्म में काम कर रहा है, रादर ही इज़ यूजिंग हिज एनर्जी इन प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल्सो. इफ़ ही हैड टू लिव इन द सिटी फॉर अ ईयर, जोल सेज ही वुड मोस्टली मिस द लैंड. अगर उसे एक साल के लिए सिटी में रहना पड़ जाए तो जोल कहता है कि वो अपने इस गांव को और फार्म को वो बहुत ज़्यादा मिस करेगा, इसको याद करेगा. आई वुड मिस सीइंग थिंग्स ग्रो. चीज़ों का उगना जो है उसको बहुत ज़्यादा मिस करेगा. द चेंज ऑफ सीजन और इसके अलावा मौसमों का बदलना. इनफैक्ट इफ़ जोल कुड चूज़ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, ही गेसेस ही वुड लिव राइट हियर. तो वो इस रूरल लाइफ को पसंद करेगा, इस फार्मिंग लाइफ को पसंद करेगा. इट वुड हैव टू बी कंट्री. After living out here, I don't think I'd ever want to be in the city. You just don't have the freedom. तो सिटी लाइफ में वो ये सोचता है कि कोई आज़ादी नहीं होती और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा नहीं होती. आई एम नॉट सेइंग अ सिटी किड डजंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू डोंट वर्क एज अ फैमिली द वे यू डू ऑन अ फार्म. इट्स जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी. ये गांव
मेरे लिए सही रहने की जगह होगी. So he would prefer this farming and rural life over city life. Thanks for watching and clicking the channel. Please suggest and comment. See you in the next chapter and happy learning.